Hello, children. How are you all? So, I am here to play with clay. So, we will be doing our clay activity now. We'll be making a fruit basket with lots of fruits in it. Come, let's get started. So children, we'll be making a fruit basket for which we'll be needing some amount of blue clay and white clay. So let us get started. First, we'll take some amount of blue clay, usko roll karke we'll make a ball and thumb se press karke we'll give it a round flattened shape. Okay, something like this. It should be round. Now, we'll keep it down. Now we'll take some amount of white clay और उसको भी रोल कर करके we'll give it a rope like structure, है ना, ऐसे rope like structure and then we'll measure ये circle को cover करता है कि नहीं. अभी फिर से और एक बार measure करेंगे. Yes, देखो ये circle को cover किया, so this is perfect. Now ऐसे ही we'll make 4 of these rope structures. ठीक है, 1 2 and 4. Good. So 2 we'll take 2, एक end से press करेंगे and ऐसे turn कर करके we'll give it a braid kind of structure. जैसे चोटी बनाते हो ना वैसे ही बनाना है. So 2 से हम लोग ऐसे करेंगे and second दूसरे 2 से भी we'll do the same thing. We'll repeat it. Yes, like this. Now we'll have to put this 2 around the circle on top. ऐसे करके extra वाला निकाल देंगे and we'll just press it little bit. Yes. Now second को भी first के ऊपर ऐसे लगाएंगे like this. So our basket is almost ready. थोड़ा सा press कर करके ऐसे करेंगे. Yes, so our basket is almost ready and it will look something like this. देखो, it will look something like this. Now we'll be making a bunch of grapes for which we'll be making small balls. देखो ऐसे छोटे छोटे balls बनाएंगे. We'll make many of these and then we'll stick these balls with one another. ऐसे करके हम लोग stick करेंगे. Yes. फिर उसके back side में भी rest of the balls we'll be sticking to give it a 3D structure. Then we'll make the stalk of the grapes. Now with the help of a pencil we'll make a small hole and इसी hole के अंदर हम लोग जो stalk बनाए थे उसको fix करेंगे. ठीक है, so we'll make a small hole and we'll put the stalk inside. We'll give it a light press and our grapes are almost ready. Bunch of grapes. Yay! Now we'll making pineapple for which we'll be needing some amount of येलो क्ले एंड ग्रीन क्ले. येलो क्ले को हम लोग ऐसे रोल करके प्रेस करेंगे और हम लोग इसको ओवल शेप देंगे. पाइनएप्पल का शेप क्या होता है? ओवल. यस, ओवल शेप देंगे. एंड नाउ वील टेक सम अमाउंट ऑफ ग्रीन क्ले. उससे हम लोग ऊपर पाइनएप्पल की लीव्स बनाएंगे. नीचे से फ्लैट एंड ऊपर से थिन. यस, टर्न करके ऐसे वील स्टिक. ऐसे हम लोग वील मेक 5 ऑफ दिस. 1 2 फिर और 2 बनाएंगे and we'll stick it on top. Yes, like this and like this. So our pineapple is almost ready. Now with the help of a scale हम लोग इस पे ऐसे impression बनाएंगे. pineapple के ऊपर ऐसे cuts रहते हैं ना. Yes, so we'll make these impressions. So our pineapple is ready. Wow! Now we'll make some cherries. Red and green clay. Red clay से we'll make 2 balls. देखो ऐसे रोल करके पाम के बीच में we'll be making 2 छोटा छोटा balls. Yes. Now we'll be making the stalk of the cherry for which we'll need some green clay. उसको ऐसे rope like structure देंगे. बीच में से कट करके 2 cherries है ना, so 2 stalk. With the help of a pencil we'll be making small holes on top of the cherries. उसके बाद हम लोग वो green stalk को उस hole के अंदर डाल देंगे and we'll adjust it with a pencil if needed. दोनों में we'll do the same thing and then we'll press it from the top. And now we'll be making a leaf. लीफ के लिए वील बी नीडिंग सम ग्रीन क्ले. उसको थंब से प्रेस करके उसको लीफ का शेप देंगे. ऊपर से थिन रखेंगे एंड द बेस विल बी थिक.
Abhi, our cherry is almost ready. So now this is our pineapple, this is grapes and this is cherry. So ये तीन जाएंगे fruit basket के अंदर and it will look something like this. Wow! So I hope all of you enjoyed this activity. See you again next week with a new one. Till then, bye bye.